Assalamualaikum students, how are you? Fine, perfect. I think so. We have already discussed about the population, sample, example of population, example of samples, and what is the difference between the population and the sample space. And I said that all the calculation in a statistician department will always be on sample. ठीक है ना, जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है, सैंपल पे होती है। और उस सैंपल को देखते हुए हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। और यही सेम चीज जो है वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल्स के जो हमने राइस एग्जांपल दी थी। राइस एग्जांपल के अंदर हमने बात की थी कि हमने जो भी सैंपल हमें दिखाया गया 200 रुपीज का, तो 200 का हमारे पास सामने क्या आ गया, सैंपल आ गया। अब मैंने कहा कि भाई 200 का वो सैंपल है हमारे पास, क्या मैं उतना ही परचेस करूंगा? नहीं, मैं उतना ही नहीं परचेस करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मेरी जो परचेसिंग थी वो कितनी थी, 5 kg की थी। तो मुझे दिखाया गया थोड़ा सा चावल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैलकुलेशन हुई वो बेस किस पे की, आपने जो भी रिजल्ट निकाला वो किस पे निकाला, सैंपल पे निकाला। आपने कहा अगर ये चावल 200 रुपए है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो मैं चावल परचेस कर रहा हूँ 5 kg, तो वो भी क्या होगा, वैसे ही होगा जितना आपको दिखाया गया। तो इट्स मीन इस बात को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। आपको तमाम सबको बात बोल रहा हूँ कि we first to calculate on we are first to select the sample from the population and then sample पे जो भी आंसर आता है हम फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन हमारी वैसे ही होगी, पॉपुलेशन हमारी वैसे ही होगी, ठीक है ना। फिर और बात एक और ये थी कि मिसाल के तौर पे if we select random 4-5 students from some class and we trial the some questions and we have to conduct some MCQs based some questions and about the something ऐसी जो चीज क्लास की रिप्रेजेंट की जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं 6 to 7 स्टूडेंट्स अगर मैं क्लास से निकालूं बाहर, या क्लास में ही मैं पूछ लूँ उनकी हाइट पूछ लूँ कि what is your height of 5 to 6 students. So I think so in the whole population, the mean of the whole population is on the same height. Okay, it means if you're talking about if you're talking about the second year students, in second year students, some of the population which height is 5'9", 5'10" in boys, and in girls is 5'6", 5'7". So this depend on the condition. Is depend on the condition in which you are here. कि आप किस क्लास में उस पर डिपेंड करता है। तो इन एक्चुअली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो है उनकी जो हाइट होती है वो जो एवरेज हाइट होती है वो इतनी होती है। तो इट्स मीन ये हुआ कि मैंने 3-4 बच्चों से मैंने आपकी उनकी हाइट पूछी और जो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी क्लास की जो हाइट के स्टूडेंट्स हैं वो इतनी स्टूडेंट्स हैं, इस हाइट के स्टूडेंट्स हैं। तो उसका मतलब मैंने जो कैलकुलेशन की किस पे की, सैंपल पे की, और जो आंसर निकाला मैंने वो किसका आंसर निकाला, वो आंसर मैंने निकाला किसके ऊपर, सैंपल पे, रिजल्ट पे हमने काम किया और आंसर जो आ गया वो किसका आ गया, पॉपुलेशन का आ गया। दिस इज द मेन थिंग कि इस चीज को बात समझने की है कि अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम आगे फर्दर इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई क्वायरी? लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा इस चीज को, एंड देन इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी, you feel free to use chat box. Any queries about this? Okay. Yes, because हम सैंपल को ही देख रहे हैं ना। मतलब कि अगर मैंने अगर एक मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी एक क्लास के स्टूडेंट को देखूं और उस क्लास के स्टूडेंट को देखते हुए मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं
कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि हर क्लास के जो है ना वो अपने मतलब हर बच्चा जो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो इट इज वेरी टू सम पीपल टू पीपल कि हर पीपल जो वो एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो है उसकी पर्सनैलिटी शो कर रही होती है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो कैसा होगा। तो इट्स मीन एक बच्चा जो है वो अपने पूरे खानदान को प्रेजेंट कर रहा है, एक बच्चा जो पूरे अपने खानदान को प्रेजेंट कर रहा है। इसी एक तरीके से एक बच्चा जो है वो एक कॉलेज को भी प्रेजेंट करता है। समटाइम हम क्विज करने जाते हैं कॉलेज की तरफ से, तो इसका मतलब हम जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 3 to 4 स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर वो क्विज के लिए जाते हैं। जब वो क्विज के लिए जाते हैं तो वहां से जीत के आते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे नहीं जीते। कौन जीता? कॉलेज जीता, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, ठीक है ना। तो सैंपल पे कैलकुलेशन होती है, और फिर उसको देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं किसके ऊपर? पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ भी पॉपुलेशन जो होगी वो भी ऐसी होगी। अगर हम किसी भी कॉलेज का नाम ले लें और उस कॉलेज में हम कहें कि हाँ पे ये जो बच्चे वो जीत के आए हैं, तो उसका मतलब उस कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे, उस कॉलेज के बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? अच्छे होंगे। तो दीज आर द एग्जाम मोर, आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स in daily life examples, and you must be focused on yourself कि आप जो है वो किस तरह से एग्जाम्पल्स को और बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, क्लियर। समटाइम एग्जाम्पल्स हम देख रहे होते हैं कि हम क्रिकेट मैच के एग्जाम्पल्स देख रहे होते हैं, कि हम जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच, ऑन द बिटवीन ऑफ द मैच, वन टीम ऑलरेडी हैव टू प्ले, एक टीम जो है वो ऑलरेडी अपना काम एक मैच जीत मतलब खेल चुकी है, एक साइड एक इनिंग खेल चुकी है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द मैच ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक सो वर्ल्ड कप, Asian World Cup, I think the Asian World Cup, the graph of the Pakistan is on based on last over, जो लास्ट ओवर था, दिस द हमने लास्ट ओवर देखा नहीं, और लास्ट ओवर कंप्लीट भी नहीं हुआ था मैच का। पहली इनिंग इंडिया खेल के जा चुका, सेकंड इनिंग के लिए जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए आया। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट ओवर आ गया और नंबर ऑफ रन जो थे वो ज्यादा थे। हम उस वक्त तक हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा। तो इसका मतलब कि आपने सैंपल देखा ना, आपने क्या देखा? आपने सैंपल देखा। आपने तो अभी पूरा मैच नहीं देखा है, अभी तो आपने पूरा मैच ही नहीं देखा है। जब पूरा मैच देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। सैंपल को देखते हुए आप क्या करते हैं? आगे की प्रिडिक्शन करते हैं। सैंपल को देखते हुए आप आगे क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, द मेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ओके। So if I was talking about the match of the Asian series, ICC World Cup, I think so, एशिया का वो था 2020 का था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसके अंदर लास्ट मैच में उसमें लास्ट ओवर से पहले तक तमाम जितनी भी हमारी जो पब्लिक थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान will lose the match, but in the last over the Afridi performed very well and हम वो मैच जीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल से आपने कोई चीज कैलकुलेट की है, सैंपल से आपने कोई चीज कैलकुलेट की है। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कि अगर आपने सैंपल से कोई चीज कैलकुलेट की है, आपने लास्ट ओवर नहीं देखा था और उस वक्त आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत भी हो सकती है। आपकी प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो सकती है? गलत भी हो सकती है। तो इट मे बी on the basis of the sample, we have to observe that our prediction is wrong. So the answer of the statistics is accurate or not? बताएं आप कि जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जहां पे प्रेडिक्शन की बात आती है, तो वहां पे आंसर जो है वो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, वो एक्यूरेट हो। एमसीक्यूज में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं आपके कि बताएं स्टेटिस्टिक्स का जो आंसर है वो
the result of the statistics is dash. The result of the statistics is dash. So it could be accurate or not. It's reasonable. So on that condition, we have to select second option. The answer is reasonable, not accurate. It's maybe reasonable, approximately equal to. Okay, so this is the most difficult thing is that the prediction, it's always not be a right position, and but the prediction, if you not a prediction, you have to complete the task, and then after you send, that is the population. So prediction कहाँ पे होती है, सैंपल पे होती है, और सैंपल को देख के हम काम कर रहे होते हैं किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो लास्ट ओवर जो था वो पाकिस्तान का हमारा जीत गया, और वो मैच आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो प्रेडिक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। सो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है गाइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन हियर? I have a lot of examples. I have a lot of examples to explain this, but I think so. It is enough for this. In these examples in here. So, if you have any question about this topic, no. Can we move to the next slide? Okay. Now I'm going to the next slide. Is uh, uh, watch carefully. Okay. Now, parameter. What is parameter? You don't know about the parameter. What is parameter? Parameter shows that, you can see the slide on your screen, a summary measure that is computed to describe a characteristic of entire population is called a parameter. So it's mean I can say that any calculated value which comes from population is called parameter. Can I say that? Can I say that any population, any calculation which on population is called parameter. Any calculated value which comes from population is called parameter. I think so. I'm agreed to this that say I can say this parameter. What is parameter? Parameter, any calculated value which comes from population is called parameter. So parameter P, parameter P. Population also begin. The first letter of population is P. So parameter, the first letter of population is P. The first letter of this word is P. So parameter and population. Parameter and population. The first letter of parameter is P, and the first letter of the population is P. So it's both are interacting to each other. Both are interacting to each other. So I think so. This is the best way to learn about that. Due to I think so. Your memory, you fix in your memory is this, that the population is a part of the parameter is a part of population. So any calculated value which comes from population is called parameter. So this is the definition of parameter. So now, in your course, here is I think so. You will see that the mean is, what is the mean is this. You must be think that mean, how to show the mean, how to show the mean. The mean, this sign is show in mean. In population, it's mean in parameter. It shows the population of the mean. This mean is showing the mean of this population. Okay.
So this is the sign which called mu. So that's why the mean is represented by this, and the standard deviation is represented by this. You must be focused on this thing is are used in population, used in parameter, used in population. These both things you can be said that in the population and parameter, and you will be see that when we talking about the population, the what is the population, what is the mean of the population, so we will use the sign of mu. And when we're talking about the standard deviation, how to calculate the population standard deviation by population, we will use the sign of this. So just to remember कि इनके सिर्फ साइंस हैं, इनको याद रखना है, ठीक है. So now what is statistic? Must be observed that it is not statistics. आखिर में s नहीं है. It is not statistics, it is statistic. So statistics, when I was talking about statistics, so it's mean that we can conduct we will use the 5 steps. It's the procedure. Statistics is the procedure. How to calculate, collection of data, preparation, presentation, analysis, and interpretation of data. It's called it is the part that called statistics. But we are talking about statistic. In this condition, I am talking about statistic. So what is statistic? In the examination side, it may be the examiner say, what is the difference between statistics and statistic? What is the difference between statistic and statistic? So you can say that statistics, the first the definition of statistics on first point and its example, and in statistic you can write this thing on statistics, the definition of statistic. So we are I'm I now a summary measure that is computed to describe a characteristic of a sample is called a statistic. It is the I think so. This statement is very difficult for you when I'm talking about. I also called this statistics. The definition of the statistics: any calculated value which comes from sample, it's called statistics. You can say this. You can see on your screen this. The characteristic of sample. It's mean that if we are talking about the statistic, so it means that any calculated value which comes from sample is called statistics. So this is the very easiest definition of statistic. Anything clear? Any problem in here? If you have any problem, you discuss me, and I will pause this video and then I will check your chat box and then discuss on the topic. Parameter, any calculated value which comes from population is called parameter. PP, population starting from P, parameter starting from P. So these both things are attached to each other. Now we see this statistic, and then sample. The first letter of statistic is S, and the first letter of sample is S. These both things
interacting to each other. So I think so it is the key point. I think so it is a very key point for you for learning is this, that statistic कब होगा, parameter कब होगा. So the statistics, any calculated value which comes from sample is called statistic. Is there any problem? No. Okay. Example. On that condition, parameter, on that condition of parameter, you must be see that the sign of mean, the sign of mean on parameter is mu, is mu. But in the case of sample, statistic, in the case of statistics, we denoted the mean is x bar. We denoted x bar. जब भी हम सैंपल से कैलकुलेट करेंगे तो it means x bar. And when we were talking about the standard deviation, we used SD. We used SD. This thing is very important. This thing is very important to you because यहाँ पे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जब हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो पैरामीटर के अंदर हमने कहा था कि पैरामीटर में साइन म्यू यूज होता है, और यहाँ पे जो सैंपल में साइन, स्टैटिस्टिक में साइन है, वो किसका साइन है, एक्स बार का, मीन का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना. फिर उसके बाद if I am talking about the standard deviation, the sign of standard deviation is omega a from by a. So you can see that the slide, but I think so I'm here telling about this. This is called sign of sigma. Sigma represents standard deviation. Okay, but about the topic of statistics, we talking about the standard deviation. We will use SC. So this is, I think so, it is very I think this, like today's lecture is very important for you. We're talking about the parameter, we are talking about the sample statistic, and I'm in this lecture, today's lecture, I have given you a lot of examples on daily life, so you can be observe that, and you can be see on your side, and you can be search on your own self. तो आप खुद उस चीज़ को सर्च करें गूगल पे, और जो है उसको देखें, चेक करें. आई थिंक सो आपका कोई कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो आपका और क्लियर होता जाएगा. इज देयर एनी क्वेरीज? Is there any queries? Okay. Okay. I think so. Both, all of the students, I think so, should be clear that what is the difference between the population and the sample, and what is the difference between parameter and sample, parameter and statistic. Very confusing in these things, but I think so up till now, I think so you are focused about that, और जो है आपको बात समझ में आ गई होगी. So yes, okay. Okay. So I think so. We will discuss the next topic. What will be the next topic on our lecture? First, you check your notes. I have provided you on your classroom theory of statistics. In that note, you must be learned by the definition of statistics, by definition of population, by definition of sample, definition of statistics, definition of parameter,
difference of parameter, so you can learn from that area. Okay, you have a notes on your group. I think so. It is fine on today. Uh, Inshallah, we will meet on next lecture, and then if you have any queries, you can discuss with me, and I will be uh, clear on that topic in here in this forum. Okay, clear. Nice students, you are very perfect students, you are very fine, or you are very uh, great student from my side in my class. I observed that you are very interesting people. हम दोनों आपस में बहुत अच्छे से आप इंटरेक्ट करते थे क्लास के अंदर भी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हम जो आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपस में यहाँ पे आप अपने चैट बॉक्स के अंदर वैसे ही जवाब दें जैसे सब हम क्लास में दिया करते थे. So it will be very helpful. It will be very creative class if if we want to know the topics. We want to understand the topic. In that condition we will discuss to each other. Okay, so if you have any queries, any questions, you can ask me on your chat box. I will discuss with you, and then I think so is enough for today. Okay, till then, Allah Hafiz. Till then, take care of yourself and remember me in your prayers. Okay, thank you. Allah Hafiz.